अनदर एक और टारगेट था हमारा, डिस्पैच टारगेट का था, वो था 750 मीट्रिक टन हमने डिसाइड किया हुआ था इस महीने का। लास्ट महीने हमारा 660 था, तो हमने 750 की जगह हमने 927 किया, 927 मीट्रिक टन किया। तो हमने 3 गोल एक साथ अचीव किए इस बार, और वो काफ़ी अच्छा रहा। उसके लिए हमने अपना 31 सितंबर को हमने उसका सेलिब्रेशन किया, और टीम आल्सो एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट चैलेंज। Oh, that's really great. And actually एक फोन आ गया था अपने पार्टिसिपेंट का, अश्वनी जी का। वो ओके कहे थे तो लॉग इन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कहा चलो ये दूसरे हैं, अश्वनी जैन है ये। ओके ओके। तो मैं एक्चुअली बोल रहा था, फिर से रिपीट करूँ सर? नहीं नहीं, मैंने सुन लिया था साइड बाय साइड। ओके। तो और that's एक really great. Yes. या एक और हमारा कंपनी का खुद का कॉमन गोल था, इनवर्ट गोल था, अश्विनी जी के साथ में हम लोगों का सबका गोल था 3000 मीट्रिक टन पार करने के लिए इस महीने का। तो वो हम लोग 3052 किया। वो उसमें हमारा ग्रैंड सेलिब्रेशन है मंडे को, एक पार्टी सी रखी गई है पूरी टीम के साथ। उसमें मार्केटिंग का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मार्केटिंग इन्वर्ट किया है, तो मार्केटिंग टीम के साथ में हम लोग मंडे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो एक मतलब ये मंथ अच्छा था हमारे लिए, काफ़ी अच्छा That's रहा। awesome. यस, थैंक यू सर। Actually, with their company, we have done more than 40 participants pan India in last 5-7 years. So good. So Ashwani ji, welcome. Good morning. Good morning. And what has been your, or Satyendra ji, what has been your personal victories? पर्सनल विक्ट्रीज में सर मैं अपने एक्सपेंस के लिए जो मैंने बोला था कि हमने 30% इंक्रीज करना है, तो उसमें दो चीज़ें हैं, या तो सेविंग कर सकते हैं या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो जैसा आपने सजेस्ट भी किया था कि वी हैव टू टॉक विद द मैनेजमेंट टू टेक द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बाय डिफॉल्ट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने सोच रहा था, मैंने बात करने वाले थे, तब तक सामने से ही आया, आई डोंट नो दिस इज द विजुअलाइजेशन या कुछ भी हो। उन्होंने अभी अगले 15 सितंबर से रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इंक्रीज हो जाएगा। उन्होंने एक्सेप्ट मार्केटिंग, टोटल विल बी रिपोर्टिंग टू बी मी। तो मार्केटिंग को छोड़ के पूरा डिपार्टमेंट मुझे रिपोर्ट करेगा। अश्विनी जी ने मीटिंग किया था मुझे मेरे साथ में, और उन्होंने स्पेशली मुझे बताया था। अभी ऑफिशियली नहीं आया है मेरे पास कुछ भी, लेकिन अनऑफिशियली ऑफलाइन उन्होंने बताया मुझे। How does it feel? यस, अच्छा है। मेरे से पूछ भी रहता है कि यू कैन टेक दिस चैलेंज। हम चैलेंज नहीं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, वी कैन डेफिनेटली वी कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। So now let's move to Prateek ji. So Prateek, please share your personal and professional victories. Like professional is like already for 1 week I was just prioritizing my task with my boss and the win-win agreement. And first, as you are aware, like that is for that first task is to achieve that annual target. Like for overall, the pending target is left with my territory. So that is there. So for that we had just discussed with my boss also what short terms goals we need to do and how we can tackle that thing, and per month and per week what we need to do, per day what we need to do, like daily task and weekly task we need to prioritize and we need to track also. And then uh, every after like 6 o'clock or 7 o'clock, just you need to see the accomplishment, what you have achieved or what are the pending tasks, you need to note down that task. So those things I'm prioritizing like that way only. That is the thing in a professional front. Personal, like So yes, how does it feel? कैसा महसूस हो रहा है? How does it feel? yes, definitely. All the things are on a streamline. The time, the work done are on basically on the time frame. Deadlines are matchings every day. So that is there. And yes, for next week also. And now I'm pre-planned. Like today is Saturday, so I'm pre-planned what next to be done for next week. So what target I had done for myself for self evaluation, that is there. So definitely it is over boosting myself, and I'm hoping that I can achieve my this monthly target. I can say it is not an annual target. I am saying now it is a weekly target, monthly target that I can achieve very well on time. Wow. Can we have an applause? Thank you. And for personal front, definitely that one is the routine daily walking and something sort of like for freshness of my mind. That was a spending for last 3-4 months. I was just thinking about it.
But yes, for every again, I started for last week for 15 minutes walk every, like in morning, after lunch and dinner. That is the routine task had been set, and exercise also at times. That is there. That also being me physical fit and everything sort of. So how will this benefit you? Definitely, if you are physically fit, definitely your perception, everything, your work, professional, personal, everything will be sorted out. If you are lethargy, that then your work will be delayed. Everything it will be correlated to everything. So definitely, it will. The day starts when I walk something. Definitely, it will lose my weight as well. That is there. But, that is also target plan for this 6 months in my area. That is there. Okay, very good. So now let's move to Anurag ji. Yes. So yeah, please share your personal and professional victories. Again, the professional side, I was not able to schedule my daily tasks or meetings with my team. So now I've tried just circulated a schedule, and we are sticking to that schedule for the individual meetings, and I'm getting results from that. Just because sometimes people were not here because of the COVID situation, वो पूरा break हो गया था. So now again that has been re-energized, and जो भी doubts होते हैं लोगों के, जो भी clarifications होती हैं, time to time मिल जा रही है उनको, and things are moving fast. How does it feel? It's moving. See, it started 1 week now only, so fine. I'll still have to get more results. I'll feel better next week maybe. So, but Fine is banned. We need to express. But otherwise हम लोग क्या है कि हम लोग to do में घिरे रहते हैं. Celebrate करना भी जरूरी है so that we have that energy. Even that victory is very small, so no victory is small actually. Right. Yes. I got your point. Then this is one personal side. During the lockdown, I got lazy. Because fitness, I was not concentrating, but I started that. The mornings, I'm doing some exercises are being done. So that is the personal side I've started. Wow. So क्या benefit होंगे आपको इससे? क्या फायदे होंगे? फायदे तो है ही सर. फिटनेस I used to do, मैं पहले ट्रेनर भी आता था, तो अब तो ट्रेनर नहीं आ रहा है पहले, but I know when I was doing the training with the trainer, the amount of energy was always high. पहले सीढ़ियाँ एक साथ दौड़ के जाता. So after 6 months that has come down. Now again it have to hit that. So fitness is very important to self energize. अपने आप को energize रखने के लिए full day. Thank you. Wow. Keep it up. And we are also recording this session. So first 2 sessions, like the earlier session, we have shared the link. Same way we'll share the link of this session also. So yeah, Ashwani ji, let's come to you. So can you share your victories? Personal and professional victories both. I joined late basically. I joined late basically. Which victories I have to tell? Can you tell? हाँ, मतलब हमने अभी ये शुरू किया था कि whatever we have achieved in first 2 weeks, like because 2 weeks back you joined this session. So even though it can be a very small thing, or it can be some new activity or something, some change which we have done. So some personal or professional victory we need to share every session so that we can re-energize ourselves. Sir, let me tell you very frankly, जब हम 27 को तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये इशू. अश्वनी जी, आपका वो कैसा रहा फॉरगिवनेस? जो पूरा हफ्ता है वो कैसा गया? जो आपने सोचा वो कर पाए आप? यस. थोड़ा आपका वॉइस है ना ब्रेक हो रहा है. देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम. आप या तो टाइप भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, दैट्स नॉट एन इशू. या आप एक बार दोबारा रिकनेक्ट करिए.
नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है. हाँ, he is reconnecting again. So no, that's really important. Anmol, आप भी you can also type on the chat if you have got audio problem. You can type. Though we had a long discussion this week. Once or twice we discussed. So share your personal or professional victories. If you So can. it's working, I guess. My mic is working right now. So you can share now. Then I will Definitely, come sir. to Ashwani ji. Let's discuss first with Anmol. Yes. Definitely. So I actually started with my company. It's called Reset, and it's a graphic designing and a video production company basically. And I guess that is what I've achieved on my professional front. And at the personal thing, I believe I've started working out again. काफी टाइम से मतलब हो नहीं पा रहा था बिकॉज घर पे रहने की वजह से शेड्यूल खराब हो गया था. तो सिंस लास्ट 1 week आई गेस 8 days precisely I should say I've started working out again and मतलब अब थोड़ी energized feel होता है पहले के मुकाबले. So how does it feel? It feels quite better sir. अब मतलब थोड़ा फिर से motivation आ रही है अंदर से कि हाँ I have to start with I have to start with my work. I have to start with the stuff that was pending काफी पहले से, क्योंकि मैं सोचे जा कि करूंगा और वो हो नहीं रहा था क्योंकि मैं सोच ही रहा था, बस एग्जीक्यूशन हो नहीं रही थी मेरे पार्ट से. Very good. Because we sometimes get disturbed if we don't take any action, don't take any big action. But then if we start taking a small actions also, it makes a lot of difference. That's why we True, say sir. that, okay, 1% improvement every day can lead to huge improvement. And this reinforcement is very important. जो रोज हमें अपने आप को reinforce करना है. So हम हर सेशन में ये विक्ट्रीज जो हैं we will discuss in the beginning of the class so that we can reinforce and we can re-energize. Plus ये सिर्फ क्लास के लिए ही नहीं है. This is a kind of habit that we need to develop in terms of every day in our diary or in any Excel file we can note down what we have achieved. We need to, like last time we discussed about this point, let's write down every day when we are doing the closing. जब हम closing करते हैं, let's write it down that okay, these have been achievements of the day and these things we have to improve and these are my learnings. ताकि whenever we go back again to that, we will get a huge kind of a knowledge base and we can self-motivate ourselves also and we can become a learner and we can improve in all the areas. What do you think? Is it important? Yes. Definitely sir, definitely. Okay, good. So let's start with the kickoff session. So I will now discuss the today's main agenda, which is the kickoff. Actually, मैंने पहले भी बताया, first 2 sessions are more conceptual sessions, and then the forthcoming sessions will be more of application based in terms of interaction and in terms of what kind of changes you have applied. Okay, so Ashwani ji is back. So let's hear from him. Yes, Ashwani ji. So how was your forgiveness week and कैसा रहा था? सबसे पहले मैं आप सबसे उत्तम क्षमा मांगता हूँ. एक्चुअली ये हमारा जैन्स का फेस्टिवल है और इस दिन हम लोग सबसे जाने अनजाने में जो भी अगर हम कोई गलती करते हैं पूरे साल में तो उसके लिए हम लोग सबसे क्षमा मांगते हैं. तो मैं ये मान के मैं आप सबसे क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई भी दुख तकलीफ या कुछ भी हर्ट हुआ हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी एंड आई एक्सपेक्ट फॉरगिवनेस फ्रॉम योर साइड. तो मैं राहुल जी थोड़ा सा आपको ये बताऊं, लास्ट वीक मतलब जब हमने लास्ट क्लास किया था उसके नेक्स्ट डे से ही हमारे पर्यूषण पर्व स्टार्ट हो गए थे. वो अभी ट्यूसडे को ही कंप्लीट हुए. तो एक्चुअली उसमें हम लोग काफ़ी सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो मैं फ्रैंकली लास्ट क्लास के बेसिस पे मैं कैसा गया ये आपका 2 हफ्ता social involvement? Are you happy with that? Yes, I am very happy. I am very happy. So sir, that's a victory. That is your victory. ये आपकी विक्ट्री है. जो आप सोचते हैं उसको कर लेते हैं. That is the victory. Thank you बहुत.
Yes. तो बल्कि इस पैंडेमिक में और जिस तरीके की सिचुएशन थी, मुझे लग रहा था कि काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस होंगी, क्योंकि जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो हम लोग प्रॉपरली कर पाएंगे, बट बाय गॉड ग्रेस एंड वो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, मोर देन एक्सपेक्टेशन. So how does it feel? It feels great. ग्रेट. तो कोई बात नहीं, अभी जो आपने मिस किया, मान लीजिए कुछ आपने मेल नहीं किया, तो अब संडे तक आप मेल कर दें. मैं आपको नेक्स्ट वीक में प्रॉपरली उसे करके मैं आपको करता हूं. हाँ, बाय 12th प्लीज ईमेल जो भी आपका पेंडिंग है, सो दैट वी आर ऑल एट सेम पेज. फर्स्ट 2 सेशंस में हम लोग इसीलिए थोड़ा सा टाइम रखते हैं, एंड वी गो स्लोली इन फर्स्ट 2 सेशंस, ताकि वी ऑल आर एट सेम पेज और कोई डिस्ट्रप्शंस होते हैं उसको मैनेज कर लो. सही. Okay, so now let's move to the today's agenda, which is very important. Like some of you might have heard about this 7 habits. Have you heard about 7 habits of highly effective people by Stephen Covey? Yes. So ये जो Stephen Covey is one of the best seller. We know that he is one of the best author in terms of the this domain. But you would be surprised, Stephen Covey had been the LMI licensee. Earlier he had been LMI licensee. लीडरशिप मैनेजमेंट इंटरनेशनल के वो लाइसेंसी रह चुके हैं, जैसे मैं अभी हूँ. दूसरा, मोस्ट ऑफ द लर्निंग्स which he has given in this today we'll be discussing, and more than that. That's why this session is important, and it's more of conceptual session. First 2 sessions थोड़े से conceptual based होते हैं, but next forthcoming sessions will be more application based. That is next 10 sessions. So let's start with a question, simple question. How many of you want to be more successful tomorrow than today? Yes, so all of you. So that's nice, and it's it's very, you can say, most popular search on the Google. One of the most popular search on the Google is definition of success. So I want to understand from you, that is, when you think about success, what comes into your mind? Anybody? अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट पे भी बोल सकते हैं. अश्वनी जी बताइए. Success, for me, success is like basically satisfaction, feeling of satisfaction. Whatever we have think, it is not only on career front or financial front, but whatever we have thought of or we have planned for, achieve. और plus उसमें एक सबसे बड़ा major role जो है, as per me, should be satisfaction. कि ओके, हमने अगर 100 का प्लान किया, वी हैव गॉट 80, तो वी शुड बी सेटिस्फाइड कि हाँ जी 80 मिला है, और एंड वी शुड जो भी हमारा उसमें शॉर्ट कमिंग्स रही, हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. वेरी गुड. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. LMI has defined success so that we all understand the success in a uniform manner. Though we might, all of us have our own perspectives, and that's also fine. But let's understand this perspective of LMI. Success is progressive realization of predetermined, worthwhile personal goals. Very important definition, और थोड़ी लंबी है. Let us simplify it. Progressive is when we start taking action, success happens. Success just doesn't happen at the end. It starts happening when you set the goal and start taking the action. Realization is that you are achieving your goals. You are achieving your milestones. So that's why realization is very important, because it helps us in recognizing our success. Predetermined. So you are planning your success well in advance. That is not only for just this week, but for month, for the year, for few years ahead, 3 years, 5 years. And this program will help you in forthcoming sessions. You would be able to do these things smoothly. You have just started the journey, so give your 100% to the process. You would be able to do all these things, whatever we are discussing.
you would be applying it. Worthwhile to whom? Any one of you can speak. Worthwhile to whom? किसको लिए worthwhile होगा? Yes. खुद के लिए Yeah, खुद के लिए, right, to yourself, and it would be also to others, to your family, to your stakeholders, यस to the community. And personal. So personal is, that is, you are setting your own goals. Even though it may be professional, it may be any aspect of your life. Nobody is actually dictating you here. You are setting your own goals, because if suppose somebody else, कोई और आपको कहेगा you set this goal, you set that goal, then you won't have that kind of satisfaction. You won't be able to realize your potential and purpose. So that's why you are setting all your goals. Personal here just doesn't mean just for oneself. Personal is encompassing all the aspects of our life. जो हमने last time भी discuss किया था, all the aspects. If we remember that social, it's physical and health, then it is about spiritual. It's also about your family. Yeah, it's about financial and career, वो तो है ही है, but then it is also about mental and educational. So all the aspects of our life are there in personal, because all these are interconnected, isn't it? Do we agree with this? Yes. Very good, thank you. आपके yes से मेरे को भी motivation मिलता है, and I am also energized. Yes, and then the next aspect is goals. So that's why we started with this EPP program with your goals. And goals are very important because that gives us direction. वो हमें direction देता है आगे जाने के लिए. And written goals. So आप लोगों ने काफी लोगों ने email कर दिए हैं, काफी लोगों ने सोचा है, लिखा भी है. And finalize your goals, because that will help us in clarifying our thoughts. When the thoughts are clear, we take huge actions towards those thoughts. And when we start taking actions, we start getting results. And more results will mean more success. Is it okay? यस सर Very good. So a survey was done. If you see this slide, a survey was done, and it's very surprising that people who have written goals outperform the ones who do not use written goals. In fact, those who are having specific goals and have written plan of actions, they are very happy, they are wealthy, and they are wealthy not only just in financial terms, but in all the aspects of their life. So that's why the goals and the planning system, which we'll be discussing in the coming classes, it will really help you in achieving your happiness, which you want in your life. And in all the aspects of the life, as we discussed, in all the areas of life. And we did discussed about the SMART goals last time. So no need to repeat this, but yeah, just a reference to you, so that you, whenever you are thinking of goals, this SMART comes into your mind. But if this were all there to set goals and get successful, then won't be everyone be successful? So why we all are not successful as per our desires? Let's move into depth. हम और depth में जाते हैं. And motivation, this is another very important or popular term, motivation. So what do you think? How important is this in your opinion? How important is motivation in your opinion? Anybody? How important is motivation? Very important, especially in the work front. With the Okay, team. right. And what does come into your mind when we say motivation? What does come in our mind? क्या आता है हमारे mind में? Self-energized to do work. I mean, nobody has to tell you that this is your pending work or this is what you're self-energized to do that work. Absolutely, self-energized. That's there, right? Good. We feel motivated, like our thought process will be on a faster mode, and we can think more faster, more we can react like abundantly on that reaction, on the actions. Yes, that becomes seamless. और वो एक अंदर से ही अपने आप आने लगता है जब when we are motivated. और वो
वो एफर्ट नहीं लगता, वो एक फन लगने लगता है. तो यस, Yes. तो मोटिवेशन को वी कैन डिवाइड इनटू 2 वर्ड्स. थोड़ा और डेप्थ में जा रहे हैं. मोटिवेशन इज मोटिव प्लस एक्शन. Like as said by some of you, motive is reason, purpose, goal, things that motivate us, the actions or the thoughts or the purpose that motivate us, and then the actions. So motivation is just not theory. We are acting on to our purpose. We are acting on to our goals. तभी ये लिखा है, motivation is nothing but goal directed action. So we can actually summarize this in this, that motivation is goal directed action, or we can say GDA. Now let's go more in depth. What are the different types of motivation? Different types of motivation जो हमें commonly, जो हम लोग सब लोग use करते हैं. Yes, first is the fear motivation. Motivation is very dangerous actually. Yes, sometimes we have to use it, but then we need to avoid it. Let's understand why it is dangerous, why it can be very, very harmful to our mental health. क्योंकि जब हम बच्चे को कहते हैं भैया पढ़ ले वरना एक थप्पड़ पड़ेगा, तो बच्चा जो है he studies not for the knowledge, but he is studying out of fear, and that's why he is unable to retain most of it. Similarly, we are doing work when somebody is on the head, is on our head, whether it's boss or in home it's our wife. But yes, that is nothing to do with what we want to do from inside. So when the cat is away, mice will play. So वो चीजें होने लगती हैं. That's why fear motivation is external. Fear motivation is temporary, and the same goes with the rewards. Incentives और rewards के साथ भी वही चीज है कि जब तक we are giving incentive to the team, then team is saying yes, very good. But incentives खत्म. When incentive stops or fear stops, what happens? Motivation stops. So that's why it also have limited impact. Fear or incentive has got limited impact. Is that clear? Fear and incentives. Incentive या reward को हम एक ही बात कहते हैं. Reward और incentive is same. So it has limited impact. But then there is a third kind of motivation which is very important. Third type of motivation. Any guesses what is the third type? That is nothing but attitude. Attitudinal motivation. When we are doing the things from inside, because our goals are clear, our purpose are clear, so our attitude is directing our energies towards our goals, and we are motivated towards achieving those kind of goals. And that's why attitudinal motivation is permanent. It is permanent, it is long lasting, and it is internal in nature. Is that clear to all of you? Why attitudinal motivation and how attitudinal motivation has got impact on us? And definitely let's understand further. We all are creatures of habits. Or attitude क्या होता है? It is nothing but habit of thought. The way we think, the way we do the particular activity. Because बचपन से ही हमें वो एक आदत पड़ जाती है. And many new things we have learned because of that habits. So cycling पहले हमें नहीं आती थी, but when we started doing repeatedly, our habit is formed, and we now know the cycling. Same way swimming or any other activity. More or less, we are creature of habits. Yes or no? Yes. Yeah. So how we can utilize this concept to our use? Let's understand it. Before that, we know about the story of donkey. कि जो donkey है, वो donkey क्यों काम करता है? Why donkey is pulling that cart? Mostly, it is because of we either show carrot as a motivation. We show carrot. So when donkey is hungry,
So donkey eats carrot and it pulls the cart, isn't it? And same way stick, as a person we use stick to move the donkey, so that donkey moves the cart, but it has got limited impact. Both carrot and stick has got limited impact. So what to do? That donkey runs because of sheer joy of running. Donkey runs of sheer joy of running. And we human beings are not donkeys. We are thoroughbreds. Right from the beginning, right from the child, we are thoroughbreds. We need to treat other human beings as thoroughbreds. We need to trust them. We need to have faith in them so that they give their best. They act as a thoroughbreds. So let's understand further. How can we do that? Let us examine this. And this kind of connection is very important. The connection which is there in front of us. जब बच्चा 10th से 11th में जाता है, तो वो कैसे जाता है 10th से 11th में? क्या होता है? He moves to 11th class. What happens? Any one of you can respond. Yeah. When he went to the next class, right? Result. So he gets positive result. He gets pass marks या distinction या जो भी positive result आता है. So whenever we get positive result, we get success. We get higher success. Isn't it? Yes or no? Yes. Yes. And our results are function of our actions. हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, we get more results. कार्य से ही सिद्धि प्राप्त होती है. So कार्य हम करते हैं, we get results. And the result is a function of actions that we discussed. And action is triggered by our habits. Action हमारी habit से trigger होता है. हमें टाइम से पहुंचना है, हमें पता है, लेकिन कई बार हैबिट होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, तो हम नहीं पहुंच पाते. Isn't it? We know that higher the risk, higher the return. Still we are unable to take the risk because we are restricted by our habits. Habits हमें restrict करती है. So that's why habits or our thinking restrict our actions. And then thinking is based on our conditioning, जो संस्कार बन जाते हैं. So what affects our attitude? What affects our attitude? Our conditioning, our sanskar, our character. And what forms our character? What forms our conditioning? Spaced repetition of ideas. जो हम बार बार सुनते हैं, हमारी conditioning वैसे ही बन जाती है. Let me ask you a question here. Have you heard about Coke? Coke जब हमारे mind में आता है, तो what comes? Coke जब, yes. कोक मीन्स ठंडा, ऐसा बोलेंगे कि कुछ ड्रिंक्स जैसा रहेगा, वो कूल ड्रिंक्स ऐसा, इस तरह से बोल सकते हैं. Yes. When we think of, yes, Satyendra ji, when we think of Coke, then this Coca-Cola comes into our mind. Yes. ये ठंडा मतलब Coca-Cola. Coca-Cola. Yes. लेकिन actually Coke is nothing but a powder of charcoal. Yes. It's a charcoal powder. But वो चीज नहीं आती because of the spaced repetition of advertisements of Coke. वो बार बार वो हम देखते हैं, सुनते हैं, प्रिंट में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो चीजें माइंड में बैठ जाती हैं. इवन अगर हम 2 साल के बच्चे को भी कोक दिखाते हैं, तो वो भी हंसने लगता है, वो भी उसका एक रिस्पॉन्ड आने लगता है. And he visualizes, he relates the Coke with the Coca-Cola. Are you clear with this spaced repetition? How does it affect our conditioning? And my dear friends, in this program, we will focus on these 3 things that I will going to discuss. These last 3 things, which is, we will use new ideas. In this program, you will be exposed to powerful, positive ideas.
repeatedly. That's why chapter 1 you need to read or listen by 5-6 times, because when you expose yourself to powerful ideas, then it will help in creating new conditioning. New conditioning will lead to positive attitude, and positive attitude will lead to what? It will lead to further focused actions. Focused actions will lead to more results and more success. So this is a chain that you would be using for your own benefit. And LMI programs gives you that practical application process. The beauty of these programs is that it will give you a practical application process whereby you will be having tools to apply all these things. But are you understanding about the attitude in detail and how attitudes can impact our lives and impact our actions? Yes or no? Any questions, any queries, I can take it up to this point. Is this clear? Yes or no? Clear. Yeah. Sure? Okay. So now let's move forward. एक बार और थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कंडीशनिंग का. Conditioning we have been exposed since childhood, as we were discussing earlier only. Most of the habits that we get is positive, but still we tend to focus on negative habits. 99% of the things are positive, but जो वो 1% है उसी की तरफ दिमाग जाता है. वो क्यों जाता है? Because of our conditioning. Because environment most of the time say to us no, ये हो नहीं पाएगा, ये हम कर नहीं सकते. तभी कई सारे गोल्स, एस्पिरेशन, ड्रीम्स जो है वो बैक बर्नर में चले जाते हैं और हम लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर. ये आपके सामने एक चित्र दिखाया जा रहा है. एंड व्हाट आर यू सीइंग? आई थिंक यू आर सीइंग द एलिफेंट इन दिस स्क्रीन. एंड कैन यू सी दिस एलिफेंट? बिग एलिफेंट और एक बेबी एलिफेंट भी है. नाउ आई वांट टू आस्क यू हियर, what weight this big elephant can lift? What kind of weight? What kind of weight this big elephant can lift? This mighty elephant can lift. Yes, sir. Some tons, maybe. Yes, tons. It can lift in tons, but still it is unable to break this chain. ये जो छोटी सी चेन से जो बंदा वीक चेन, फीबल चेन, it can't break this feeble chain. Why? What is the reason behind it? Why elephant can't break this? Yes. वो बचपन से ही चेन में बंधा था, जब नहीं हो पाता था, तो he thinks now he cannot break that. Yes, बचपन से ही वो बंधा रहता है, उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है. सिर्फ सर्कस, एक सर्कस में नहीं, विश्व के कोई भी सर्कस में आप चले जाओ, you can go to any circus, this kind of training has been given, and that's why it's unable to break this chain. Though elephant is very intelligent and it can lift tons of the weight. Same way human beings, as human beings, we are also tied up with our negative habits. और आज से हम इसको कहेंगे elephant chains. We are tied up with our own elephant chains. It can be procrastination, it can be any excuse, it can be lack of risk taking, it can be coming late, any negative chain that we think about ourselves. So we need to remove these self-induced negative chains. Actually, we have got huge potential. We have immense potential. We are unique individuals having huge strength. So we need to focus on to this aspect and shift from I can't to I can. Let us shift from I can't to I can. Let us shift from self-doubt to positive expectancy. Let's shift from I to we, to you. That is being empathetic. Is that fine?
Are you 100% committed? Great. So now let's move further. Okay, एक वीडियो देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक वीडियो है. Let's watch this video. मैं इसको स्टॉप करता हूँ. I'll stop sharing this slide. एक अच्छी वीडियो है जो मैंने अभी कलेक्ट करी थी. तो I'll share that screen now. एक बार मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, थोड़ा बैंडविड्थ मिनिमाइज हो जाएगा. So I'll just share the screen with the audio and I'll show this video. Okay, just a minute. Yes. So what's shown in this video? Very powerful. Yes. Anybody who will want to share what is shown? दो चीजें इसमें निकल गया थी. पहले तो उसमें एक बैरियर डाला तो उस बाद में वो ट्रेंड हो गई दोनों फीस कि हमको इससे आगे नहीं जाना है. तो बाद में बैरियर हटा देने के बाद भी उनको यही होगा कि अब इससे आगे नहीं जाना है, इससे आगे हम जा नहीं सकते. तो वो इनका माइंड सेट हो गया कि ठीक है दोनों सेफ थे. लेकिन बाद में वो सार्क ने ट्राई भी नहीं किया कि वो सोच रहे थे कि हो ये हमेशा हमारे लिए ये एक बन गया माइंड सेट बन गया कि अब इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे. तो उसने आगे नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई नहीं किया. तो वो माइंड बैरियर भी दिखता है इसमें और एक दूसरा चीज भी इसके साथ में दिखता है. Yes, right. Very important sharing that we sometimes create artificial barriers. Yes, जो हम लोग artificial way. डिस्कस भी हम लोग जो कर रहे थे with that conditioning. So it's very important. Let's जो एक और चीज जो मैं सिंपल है दिल्ली की लैंग्वेज में I will share, which is about there are दो पप्पू होते हैं जो हमें हमेशा रोकते हैं. एक है blame. We started blaming others, blaming the environment, blaming the situation. कभी-कभी we start blaming Modi ji also. Okay, so blame हो गया. दूसरा excuse. So we start giving excuses. कि it is because of this reason or Y reason or Z reason. Last time we discussed this point, if you remember, COI and COC, circle of influence and circle of concern. So जो COC जो होता है ना, so okay, वो अगर है, that's a different thing. But if we drop COC, we need to ask ourselves, can we do this?
can I set whatever goal I have set? Could I have done that if we drop that COC? Things which are not in hands, if we drop those, and if we start asking ourselves that, okay, this is in our hands, can we do it? Can I do it? So 95% of the time we can do it. And we just need to remove this self-induced limitations. That's why that will give us the slight edge. Slight edge is like last time we discussed about slight edge also. So slight edge is not a very, say, big actions we need to do daily. Small improvements in the processes will help us in big change in the performance and the results. So let's move back to the slide. Want to discuss few more important points further on, which will give us more clarity. Yes. So we were discussing about the conditioning, and I hope that is clear to all of us. So now moving to the next very important and related point, which is these are the three important characteristics of successful people. First point, we have discussed this also, positive mental attitude. And this we need to apply consistently. Consistency is the ninth wonder. 7 wonders we know. Ninth wonder is consistency. And eighth wonder, जो है वो financial nature का होता है, is more of compounding, वो अलग चीज है. But yeah, so consistency is very important, which will help us in achieving and overcoming the barriers. So positive mental attitude means that instead of problems, we are seeing the solutions. Most of the time, there are problems we need to identify. After identifying problems, we are seeing the solutions only. That what solutions can be done, what alternate options are there. So converting the crisis into opportunity. That's another way of seeing the positive attitude. Accepting the situation and then finding the solutions. Then second is goal directed, which is successful people know where they have to go, how they have to go, and when they have to go. That's why last time we finalized the win-win agreement, and most of you have finalized it. Jinka maan lo nahi hua, please submit it so that you are also clear that where you have to go in next 6 months, in next 1 year time, and that path is clear. And then further today I'll be discussing a tool which will help you in preparing an action plan. क्योंकि सिर्फ गोल बनाने से it is not sufficient. Next step is action plan. Today we'll be discussing, after this we'll be discussing a tool which is there in your kit also, goal planning sheet. मैं उस पे भी आऊँगा, which will convert your goals into action plan and will further help you to take the right actions. And then the third point is self-motivation. We are winding our clock ourselves. The whole objective of this program is to make you self-motivated, to boost your self-motivation. And these are the slight edges that you will get through this program, that you will enhance in all these areas, whether it is positive attitude, whether it is goal-directed action, or winding your clock yourself, or we can say self-motivation. I hope this is clear to everybody. Yes? Great. Now, thank you. So now let's move further. So we have already discussed COC, COI. Now coming to review of your challenges. अब हम challenges जो आपने last time एक survey किया था, काफी लोगों ने वो email भी किया है. So मान लीजिए 1-2 लोग ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए. You have the challenges sheet. एक बार जिनके पास kit है वो तो they might have the printed sheet also. वो है kit. और जो online जिन्होंने भरी है, they can get that sheet in front of them. Take 2 minutes. Those who have not done, take 2 minutes. They can do it right now. That productivity challenges.
and let's have some sharings. So Anurag ji, what you have identified from this challenges sheet, and what actions you want to take further? Yes, see, I have completed, I mean, written what are my challenges are, marked myself. Low areas are like personal goals where I've rated myself low. Ability to delegate, there is one more area. Then organizational goals. So some areas that, yeah, we are not very clearly focused, that have marked myself lower. Now on this, I need to add my action plan to enhance that my target. Sorry. So after that, I have not still listed it. I'm in the process of doing that now. So Anurag ji, continuing with you, so usme can you identify 7-day goals? Say next 7 days, one goal that you want to achieve, small goal, so that you take care of your productivity challenge. One goal you can take, either personal or professional. Yeah, for personal goals, for fitness, I've already done, already started that. As I told you, it's only just happened last week, 1 week back only I started this. So one is this, and the personal length of meetings, and this for organizational, the length of meetings. Now we have a clear structured plan has been made, circulated to the team with the time frame. Yeah, this is the time that need to come prepared, so that everybody is pre-planned to come to the meeting and be a more effective meeting. So there we have done by that method. What benefit would you be having from this action? क्या benefit होगा आपको? हाँ जी, पहले क्या होता था, मीटिंग में आ गए, बट क्या प्रिपेयर करके आना है लोगों को, वो पूरा होके नहीं आते थे. लेंथ ऑफ द मीटिंग यूज्ड टू गेट सो मच. एंड ऑफ द डे वो मीटिंग का वो इट वाज नॉट अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग. Now we have circulated with how you have to come prepared. They are listed down key what is my areas, how you are going to discuss, who is going to discuss. सब कुछ ये circulate कर दिया गया है. And achievements तो होनी चाहिए. मेरे को और time चाहिए to give you the details. Very good sharing by you, Anurag ji. इसमें एक और चीज हम सब लोग को I have emailed one action sheet. एक action sheet मैंने सबको share किया. उसमें क्या, जैसे हम लोग सब लोग डिस्कस कर रहे हैं और कोई भी पॉइंट माइंड में आता है कि मेरे को ये एक्शन लेना है सपोज, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन इन दैट एक्शन शीट, ओके, ताकि वो पॉइंट मिस नहीं होगा. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? So that's why we start writing it down. Actions to be done, 7-day goals and focus goals. Yeah. So yes. So now let's move to the next point. अब हम goals पे आते हैं. So I have received your goals, Anurag ji, and you have also shared your progress with respect to your goals. And any other point that you want to share with respect to your goals, etc.? Tracking goals. Next week, I think I'll be very better position to do that. Right now, कुछ जो चालू किया है, I've already shared. Right, and also we need to see what is stopping us. जैसे मान लीजिए, if we could have dropped COC items, could you have done this better? If it is yes, तो फिर लिखिए what is stopping us, what attitudinal behavior is stopping me. सबके अपने अपने होंगे. Please write it down, your attitudinal behaviors which is stopping you. One of the very unique aspect of this program is that this program will help you to improve your attitudinal behavior, improve your attitudes, moving from negative attitudes to positive attitudes. Now, most of the attitude that you are having is positive. लेकिन क्या होता है, strength of the chain is the weakest link. तो अगर वीकेस्ट लिंक को हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हमारी चेन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. एंड ऑल ऑफ यू आर इन सीनियर पोजीशन, यू आर द बिजनेस ओनर्स, यू आर द हैंडलिंग लॉट ऑफ
So your strength should also be higher to tackle those responsibilities, tackle those challenges. And the attitude part is the most important part, which will help you to tackle all these responsibilities and challenges. Is that fine? So can you write down your attitudinal obstacles और उस पे फिर actions भी लेने. It can be daily tracking, it can be visualization, affirmation, positive message to yourself. Okay, is this clear? Yeah, clear. Yeah. So now let's move to Prateek ji. Anything you want to share? I will just show the slide. एक बार मैं slide दोबारा से दिखाता हूँ. एक मिनट. Yes. With respect to your productivity challenges, action points, tracking, win-win goals. How is the progress and what barrier was stopping you and what action you will take? That productivity challenges, like I had already shared. Okay. In this, more or less, all are okay. The points like the rankings, okay, satisfied level or something. But yes, one or two points are there, like ability to say no. That is the weakest part in my concern in personal as well as professional front. Whether it's a subordinate or junior or whether it's a senior, there are something which is not in my portfolio. I have to say yes, I can do it, but that is the thing I would like to learn how I can say no to my subordinates as well as my senior. That is the concern till date for last 9 years of my career. I cannot able to say no directly on the face of it. That is the concern that I need to learn. And second is the availability of information. That concern in that organization, like because some are the things which are like documents, vendor creation for one client, these are not available with us handy, like, so that is also a concern, like in current organization as well as in the previous, like we need to chase lot of many reminders to our UK team or something sort of, like we need to wait, we need to talk to the customer, like that is a things which we are not handy, the availability of the information for the organization. That is a concern that I need to. So what actions do you want to take regarding this? Regarding The, this, actually, say the first point. पहले first point पे आते हैं, to ability to say no. So what actions do you want to take for that? that is the thing that step by step I can say that. But yes, this for this action I cannot take right now because for one week I was thinking for this also, and if you recall, that for 3 major barriers of productivity challenge, I marked that thing also in that report. That is the thing I need to work on it really hard on it, like how I can say no to the management, to the subordinate, to personal front as well. The task which I cannot give, or like which I cannot do, but still I cannot say no. That is So the identify some actions. Some actions you need to identify, and there are many best ideas in this program that will help you. yeah. Especially the chapter 3. If you want, you can refer to chapter 3. In that, there are certain ideas with respect to no, and then chapter 1, that is with respect to attitudinal barriers. Okay. So, अब हम next session जो होगा, that is focusing on chapter 1. Right. और अभी आप लोग को next session से पहले you need to, all of you need to listen and read chapter 1 at least 6 times. It is one of the most powerful chapters. जो आज हम attitudinal barriers और जो भी discuss हमने अभी किया है, उसमें कई सारे best ideas होंगे that will help you to overcome these barriers and these challenges. Do you want to overcome? आप लोग overcome करना चाहते हैं? Definitely. Yes. So this chapter will definitely help. और मुझे भी काफी इस chapter ने help किया. Like I had this challenge of poor prioritization. मेरा challenge था poor prioritization. मेरा challenge था giving lot of time to social media, wasting time in that. And I had been able to save lot of hours in a day, 3 to 4 hours in a day, by just after chapter 1.
तो ये इतना मतलब इम्पैक्ट आ जाता है, आधा दिन हमें ज़्यादा मिलने लगता है ये। So these kind of impact is really very huge. Okay, so now anybody else who wants to share something with respect to these points? I hope it is clear to everybody. कोई query हो, one can ask also, कोई की क्वेश्चन आता है माइंड में। और देखिए ये सेशन टू सेशन के बीच में भी आप मेरे से जैसे कुछ लोगों के कॉल भी आई है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को एक दो कॉल्स जरूर बीच में करते जाइए ताकि मैं भी अगर सो जाऊं तो जग जाऊं। सो प्लीज मैसेज करिए, कॉल करिए, कोई भी डाउट्स आता है, लेट अस डिस्कस इट, लेट अस कम्युनिकेट इट। आगे पीछे हो जाता है कोई बात नहीं, पर कम्युनिकेट करेंगे तो फिर वी आर अगेन बैक ऑन ट्रैक एंड वी विल बी हैविंग पॉजिटिव एक्शंस। इज दैट फाइन? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट हमने स्लाइड एज ऑलरेडी डिस्कस किया, लेट्स नॉट रिपीट दैट। एंड नाउ कमिंग टू द today's assignments, but assignment से पहले थोड़ा सा we'll be understanding few important sheets in your kit. किट में कुछ important sheets हैं, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था GPS गोल प्लानिंग शीट है। आप एक बार किट खोलते हैं, लेट्स ओपन योर किट। इज किट देयर इन फ्रंट ऑफ यू? जो आपके जिनके पास फिजिकल किट्स हैं, जिनके पास किट अगर अभी सामने है तो वो खोल लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो नोट कर सकते हैं व्हाट दे हैव टू सी। एक बार नोट कर लीजिएगा अगर सामने नहीं है तो। ओके, सो दो दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो इसको भी आप देख सकते हो, और अदरवाइज नोट इट डाउन। एक चीज है कि वी नीड टू सी द चैप्टर 1। चैप्टर 1 आपको 5-6 बार पढ़ना है, सुनना है। चैप्टर 1 से पहले यू वुड बी एबल टू सी GPS गोल प्लानिंग शीट। जैसे आपने प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस किए हैं, वो चैलेंजेस की शीट है उसमें, उस चैलेंजेस की शीट के बाद गोल प्लानिंग शीट्स हैं। तो जो गोल प्लानिंग शीट्स हैं वो हमें एक गोल के लिए भरना है। टेक एनी बिजनेस गोल एंड कंप्लीट इट, एंड आई विल Sorry, Yes. can you just tell me the like page number something sort of? यस, मैं एक मिनट अपने किट खोल के आपको बताता हूँ। ये किट मेरे सामने भी है, देखिए। तो जिनको फिजिकल वर्जन मिला है यही किट सबको, स्पेशली अश्वनी जी, प्रतीक जी, सत्येंद्र जी, वो इन लोगों को, अनुराग जी के पास ऑनलाइन वर्जन है तो उनके पास तो है ही। GPS आपको वो डाउनलोड कर लीजिए, और मैं GPS की कॉपी सबको मेल भी करूंगा। आई विल ईमेल ऑल्सो, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। पर लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज दिस किट, वेदर इट इज ऑनलाइन और या हार्ड कॉपी, वो एक ही बात है। आज हम अभी पहले समझते हैं इस किट को कैसे यूज करना है। तो आई विल जस्ट ओपन दिस किट नाउ। मैंने किट ओपन किया है अभी। अबाउट LMI है, उसको पढ़ना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रेड दैट। अबाउट द ऑथर शुरू से देखते हैं, देन फिर आते हैं फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम EPP। हाउ कैन वी गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स, कैसे मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हैं। एक चीज है दैट इज स्पेस रिपीटिशन, वही जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि 5-6 बार हमें चैप्टर 1 को पढ़ना है, ठीक है, और सुनना है, और 2 बार आपको सुनना भी है और पढ़ना भी है साथ में। मतलब पैरेलली यू हैव टू रीड एंड लिसन। Nature of productivity, no? Lesson 1. Lesson 1. Is it clear? Parallelly, at least 2 times we have to read and listen in next 7 days. हमारा जो भी असाइनमेंट होगा वो नेक्स्ट 7 days में करना है, लास्ट 7 days में उसको अप्लाई करना है। तभी दो हफ्ते हैं। यस अश्विनी जी बोलिए। सर पढ़ना तो मैं समझ गया, लेकिन हाउ वी विल लिसन, मतलब उसमें कुछ CD या कुछ है क्या? हाँ, मैंने व्हाट्सएप आपके ग्रुप में पूरा और गूगल ड्राइव लिंक्स दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। आप व्हाट्सएप पे, फोन पे आप सुन सकते हैं। ओके। और उसको लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप पे सुनिए, फोन पे सुनिए। वाइल ट्रैवलिंग यू कैन लिसन, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ साथ भी सुन सकते हैं। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट्स अ कन्वीनियंट मैकेनिज्म टू रिटेन वेरी पावरफुल आइडियाज। It is also have that link, no? Audio one. हाँ,
आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप में, आज दोबारा शेयर कर देता हूँ। प्लीज सर प्लीज, कुछ तो में वो- मेरे को लगता है मिस हो रखा है, तो आप नो please- इश्यूज। तो मैं वो गूगल ड्राइव की लिंक अभी दोबारा डाल दूंगा सेशन के बाद, और फिर क्या है कि यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, या सो रीडिंग एंड लिसनिंग फॉर टोटली 6 टाइम्स करना है नेक्स्ट 7 डेज। और जो देखिए 2 हफ्ते इसलिए देते हैं हम लोग, 1 हफ्ते में हम लोग उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, असाइनमेंट करते हैं, और जो सेकेंड वीक होता है उसको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। या कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं कुछ डिस्कस करना है, तो यू कैन डिस्कस विथ मी, सो दैट वी हैव टाइम फॉर रिटेंशन एंड एप्लीकेशन। ओके, नाउ कमिंग फर्दर, अगर मैं उसी किट में जा रहा हूँ, वहीं जो मैं पेज देख रहा था, स्पेस रिपीटिशन कन्वीनियंस, पेज नंबर 13 जो अल्फाबेट्स में लिखा है, रोमन 13, रोमन में लिखा हुआ है 13। एंड देन थर्ड पॉइंट इज मल्टी सेंसरी परसेप्शन। देखिए मल्टी सेंसरी परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज करते हैं। मल्टी सेंसरी परसेप्शन का मतलब है वी आर यूजिंग ऑल द सेंसेस टू गेन द मटेरियल, to gain what is there in this program. So all the senses in terms of reading, writing, listening, discussing and applying. Touch भी है, you can touch your kit, you can touch the papers. तो जब हम ये सारे senses को use करते हैं, then the concept becomes in top of our mind, top of the mind awareness आने लगती है. Then we start applying in much smoother manner. Are you getting it? नहीं तो हमें याद ही नहीं है कल हमने क्या हेडलाइन पढ़ी है, हमें वही याद नहीं रहती, तो हम इतनी चीजें कैसे याद रख सकते हैं? At least I am a very average memory person. I don't have that capacity to remember. So what we can do, we can just take some ideas from the chapter. 2-3 ideas we will take. Each one of you will take your own best 2-3 ideas and start applying it. That's why let's see this slide now. अभी slide में देखें क्या लिखा है. Let's read it, which will help you to understand. Identify 2 most valuable ideas from the lesson and determine how you will apply. Okay, is that fine? Yes or no? Yes. Thank you. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, which is जीपीएस वाली शीट में बताता हूँ. पेज नंबर प्रतीक जी पूछ रहे थे 0.1 पेज नंबर, विच इज प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट गोल्स. उसके बाद ही ये आता है जीपीएस. ठीक है, तो वैसे आई विल शेयर द ईमेल आल्सो. तो ये जीपीएस की शीट है जो मेल पे मैं शेयर करूंगा. दिस इज पेज नंबर 13. पेज नंबर 0.1 है ना, उसके बाद. ओके. तो ये क्या है, यू हैव टू राइट नाउ ट्राई दिस ऑन योर ओन एंड अप्लाई फॉर एनी वन बिजनेस गोल. एक गोल पे आपको अप्लाई करना है. ये कोई भी एक गोल ले लीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड राइट डाउन द जीपीएस फॉर दैट. इज दिस क्लियर? ओके, now let's understand further. I am just reading out of this slide only. So complete the application and action questions of lesson 1 and the plan of action exercises. तो अब चैप्टर 1 पे आ जाइए. चैप्टर 1 के एकदम एंड में there are assignments. एंड ऑनलाइन में आपको दिख जाएगा असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर 1 ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. सो असाइनमेंट्स को आपको सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने, इंक्लूडिंग योर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
So all your plan of action, and then your application and action, and then in the end there is a feedback sheet. Application and action के बाद feedback sheet है, वो भर के you need to email it to me by 13th of September. 13 सितंबर तक आपको फीडबैक शीट ईमेल करनी है. ओके, Right. या और कहीं फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप कभी भी मैसेज या कॉल कर देंगे तो हो जाएगा क्लियर. उसमें कोई इतना वो नहीं है. नाउ सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग द डेली ट्रैकिंग शीट. How many of you are using daily tracking? Please say yes, those who are using. Started using. जो ट्रैकिंग शीट जो आप लोग कई लोगों ने मेल भी करी है, वापस मेल बैक किया है, एंड बाकी जिन्होंने नहीं यूज किया प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट बिकॉज इट इज द हैबिट्स दैट विल चेंज अस which will lead to better results. Then work on your 7-day goals. So let us take 2 minutes and write down both, please write both personal and professional goals. Short goals which you want to achieve in next 7 days, short-term goals, which will help you in achieving your win-win goals also. जो win-win goals होते हैं वो बड़े goals होते हैं, वो आपको 3 से 6 महीने के बीच में you have to achieve. But these 7-day goals help us in achieving, in connecting your current situation with your win-win goals. Yes. Weekly goals I already shared basically. हाँ, आपने शेयर कर लिए. बाकी लोग भी आप लोग लिख लीजिए so that you whenever you are tracking your weekly goals in next Friday or Saturday, तो आप अपना weekly goal को track करेंगे and you have to see whether you have achieved or not. Same way next week आप अपने आप से उसके अगले हफ्ते के weekly goals बनाएंगे. Anurag ji, what is your progress with respect to weekly goals which you set in earlier? जो आपने Yes. पहले set किया था, क्या progress है? So weekly goals, win-win agreement में goals I've set. Based on that, I have to make weekly goals, smaller goals. So I need to work on that. Very frankly, I have not done shorter goals, so I'll work on it. Yes, अभी हम सबको work करना है उस पे और अभी उसको लिख डालिए. अभी अगले हफ्ते जो achieve करना है उसको अभी लिख दीजिए. ठीक. फिर चेंज कर सकते हैं, वो कोई नहीं. आप वापस एक बार देख के कुछ मंडे तक लगता है चेंज करना कर सकते हैं, पर अभी जो माइंड में आता है एक बार लिख दीजिए. And please share it with me. Ashwani ji, have you written down for the next week what you have to achieve for your personal and professional goals? Yes. Yes, I will do it. अभी कुछ माइंड में आता है, please write it down. Okay. Yes. For your personal and professional. One personal, one business. Okay. Yeah. I have written 2 personal. One is to start exercise, doing exercise, and to do friendship with my kids. Okay. So sir, आप कितना time देना चाहेंगे? Like for the exercise, every day how much time do you want to give? 1 hour. तो ये भी साथ में लिख डालिए कि Okay. daily 1 hour to exercise. And what time? Okay. Time slot भी इसमें डाल दीजिए Right, sir. ताकि वो लॉक हो जाए. जैसे अमिताभ बच्चन नहीं कहते लॉक कर देते हैं. Let us lock it out. सही है सर. Perfect. So that जो हम सोचते हैं उसको अभी हमें उसको करना है, इम्प्लीमेंट करना है. ये प्रोग्राम का फोकस ही इम्प्लीमेंटेशन पे. एंड जो फ्रेंडशिप का आप कह रहे थे उसके लिए व्हाट यू वांट टू डू? I will spend time with my kids. I will understand their problem, their priorities and all. क्योंकि एक्चुअली आजकल क्या है सर कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनकी उसकी वजह से बच्चों में बहुत बिहेवियर मतलब अभी वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. ये Very good, very good, very well thought. And if you start doing this, how will you feel? I think it will be great. They will also feel motivated.
they will also like अभी क्या है, अभी थोड़ा सा गैप हो जाता है हमारे में और बच्चों में, तो आई थिंक वो जब मतलब रिड्यूस हो जाएगा तो हम भी बच्चों की प्रॉब्लम्स और बच्चों के जो भी टारगेट्स हैं, जो भी उनका एस्पिरेशंस हैं, वो सब हम समझ सकते हैं, वो भी हमारी चीजों को समझ पाएंगे सेम बैंडविड्थ पे जब हम आए। Brilliant. So Anmol, do you want to share your 7-day goals? Anmol? So in the personal goals, I felt like that I should, give more time to myself because I've been working. There is no schedule of mine that I've been following. मैं रात को 2-3 बजे तक लगा हुआ हूँ, कभी मैं सुबह 11 बजे सो के उठ रहा हूँ, तो मतलब कोई ना शेड्यूल नहीं है मेरा आज से। So I believe कि I need to get back, with regard to time. मुझे अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना है सबसे पहले। सेकेंड, वर्कआउट्स को मतलब मुझे और टाइम देना है, मतलब अभी धीरे धीरे आई स्टार्टेड विद देम, बट जितने पहले थे लॉकडाउन से उतने नहीं है। सो फिटनेस मेरी अभी प्रायोरिटी है अगेन टू गेट बैक ऑन द पेस। एंड इन द प्रोफेशनल फ्रंट आई बिलीव आई नीड टू मार्केट माई सेल्फ मोर, आई नीड टू इंक्रीज द सेल्स बिकॉज मेरे मतलब जो मेरी फील्ड है उसमें इट्स बिन अफेक्टेड क्वाइट काफी बुरे तरीके से, इट हैज बीन हिट आई कैन से। सो आई बिलीव दैट अभी तो मेरी मेन प्रायोरिटी इज टू इंक्रीज माय मार्केटिंग एंड माय सेल्स so that I have new clients to serve, and yeah, that is what my priority is right now. Yeah, Main so priority. great sharing, Anmol. And one few things which we all as a top management or as a business owner, we can say we need to give time. Every day is a daily planning. So when would you be doing your day-to-day planning and closing? Please give time for that. एक टाइम एलोकेट कर दीजिए और उसको लिख डालिए अभी। प्लीज राइट इट डाउन कि डे सुबह की ओपनिंग कब करेंगे एंड व्हेन वुड यू बी डूइंग द डे क्लोजिंग। सो यू कैन राइट बोथ द पॉइंट्स, डे ओपनिंग एंड डे क्लोजिंग। ओके, सेकेंड थिंग, टाइम फॉर टीम कोचिंग, because all of you are having teams. So team ko bhi, you are the best coach to your team. Devote some time daily for coaching your team members, for engaging with them. So what time you want to devote, what time you want to allocate, write it down. Yeah, Prakhar, welcome. I hope you are. I hope I am audible to you. Yes, sir. Okay, great. So, what benefit you would be having if you start doing this team coaching, or if you do daily? You might be doing it, but अभी consistently अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या benefit हो सकता है? Anybody? Yes, अनुराग जी या अश्वनी जी, कोई भी? Yes, अश्वनी जी. अगर हम अपनी टीम को डेली कोच करेंगे तो दे वुड बी लाइक हम और वो एक सेम बैंडविड्थ पे आएंगे और दे विल अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स, आवर एस्पिरेशंस, आवर गोल्स एंड ऑल, और हम भी उनकी प्रॉब्लम समझेंगे और हम लोग उसमें एक म्यूचुअल कुछ वे आउट कर सकते हैं कि हाँ जी हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। Right. So, sir, what time you want to give for this? For this, morning time will be good for me. And do you want to do the daily tracking for this? Daily tracking करना चाहते हैं? डेली ट्रैकिंग मींस कि मैं उनको कोच कर रहा हूँ या उनके रिजल्ट्स को आप पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब वही कोचिंग का टाइम जैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो मैं डेली ट्रैक। And the third thing is, which is very important for us, जैसे पहला हमने डिस्कस किया डे ओपनिंग, डे क्लोजिंग, सेकंड इज टीम कोचिंग, थर्ड इज also equally important, that is self development. Time for self development. And right now the time to LMI is nothing but self development.
आप जो टाइम दे रहे हैं इस प्रोग्राम को और जो भी चीजें जो इस प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं वो एक्चुअली आप अपने लिए ही कर रहे हैं, फॉर योर लाइफ, फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. So what time do you want to give daily for this? What and how much time do you want to give daily? Please write it down. Please write down that. Because अभी हमें शेड्यूल बना के अब उसको लॉक कर देते हैं. So that you give convenient time. जो भी आपका दिन से रात में जो भी convenient time है उसमें आप एक टाइम अपने लिए दीजिए. This time is for yourself. हम लोग कई बार इतने बिजी होते हैं कि हम अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाते. बट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू इज योर सेल्फ, गिविंग टाइम टू योर सेल्फ. सो नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस. अब आपका ये एक हैबिट बनेगी और आप इसको करने लगेंगे एंड इसको आप साल भर साल करते रहेंगे तो कितना डेवलपमेंट हो जाएगा. थिंक अबाउट दैट. अभी आपका जो स्फीयर है वो मान लीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके थ्रू और अच्छा हो जाए. यू विल हैव एक्सपोनेंशियल हैप्पीनेस एंड ग्रोथ बिकॉज वी हैव इमेंस पोटेंशियल, वी ऑल हैव ह्यूज पोटेंशियल. सो ये 3 चीजों में टाइम हमें रोज देना है, चाहे कुछ भी हो जाए. सो टाइम टू योर फैमिली. टीम और फैमिली एक ही बात मैं कहता हूँ. टीम is your family, family is also your part of it. तो फैमिली को भी टाइम देना, टाइम टू योरसेल्फ एंड टाइम फॉर प्लानिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, एनी क्वेश्चंस अप टिल दिस पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट 2 सेशंस इज रिटन, दैट इज 19th and 3rd October. ये आपके अगले 2 सेशंस वही जैसे हमारा जो पैटर्न है, वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न एंड द सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट्स विल बी बाय 13 September. तो जो आपका कुछ पेंडिंग भी रह गया है वो भी सबमिट करना, और ऑल्सो फॉर द चैप्टर 1 इंक्लूडिंग द फीडबैक शीट्स. ना आप लोग की बेनिफिट के लिए वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ न्यू रिसोर्स. ये पहली बार हमने एक रिसोर्स डेवलप किया है. We have started a Google Classroom और वो क्लासरूम में सारे स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग्स. जो हम लोग रिकॉर्डिंग्स जो हम शेयर कर रहे हैं मेल पे तो विल शेयर, बट लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा विच इज यू कैन एक्सेस एनी टाइम टू दोस गूगल क्लासरूम. तो मैं अभी लिंक यहीं पे शेयर करता हूँ सो दैट अभी आप लोग लॉग इन कर सकते हैं जिनके पास नेट का एक्सेस मतलब जो फ्रीली कर सकते हैं. तो वो अभी ट्राई कर लीजिए. मैं आपको सबको चैट पे लिंक भेज रहा हूँ. तो ये जो लिंक है इस पे एक बार क्लिक कर लीजिए. आई थिंक सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी एक्सेस्ड इट. तो इसमें क्या है, जो भी हम इस प्रोग्राम का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें रहेंगे. जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स तो आपकी किट में या LMI के पोर्टल में ही है, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक द प्रेजेंटेशन, द वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जो चीज़ें वो इसमें रहेंगे. और जो अपडेट्स होंगी, जैसे टाइम टू टाइम विल बी गिविंग यू मोर रिसोर्सेज. 6 महीने बाद आपका प्रोग्राम खत्म हो गया ये वाला EPP का, बट देन फिर और रिसोर्स आता है कुछ नया, तो वो भी इसमें अपडेट होती जाएंगी. इज दिस क्लियर? तो आप लोग इसमें आ गए, क्लासरूम ज्वाइन हो गए आप सब? किसी को कोई दिक्कत आता है तो वो क्या है मेरे को बता सकते हैं. अश्वनी जी, आप जीमेल से लॉगिन करिएगा अपने जीमेल आईडी से. सर मैंने लॉगिन किया बट मेरे को ये कह रहा है कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर. हाँ, वो क्या है, वो आप अपने जीमेल से करिएगा. आपने शायद कंपनी के मेल आईडी से किया होगा. ओके. तो उससे नहीं होगा. ये गूगल की क्लासरूम जीमेल आईडी से होती है. जो हमारा कंपनी का भी है वो जीमेल का ही है पर वो लेता नहीं है, वो एक्चुअली पर्सनल जीमेल आईडी ही लेता है. ओके. तो आप अपना जीमेल या तो मेरे को आप चैट पे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा तो मैं आपको इनवाइट भेज दूंगा.
Okay, Is that fine? fine. Okay, so now I will move to the last point of the day. उससे पहले कोई और question, any queries? And how was today's experience? आज का क्या experience रहा? Any sharing? What we have learned today? Yes. Prateek ji, would you want to share? Lot of learnings I got today. First is the major is the definition of success, like how we can progress, realization, everything, like sort of like worthwhile personal like goals, how we can set, like, and that short description of that elephant, that the barriers like comes in our life, short time barriers, it becomes an attitude or behavior. So we need to curb those attitude, we need to curb those problems, and we need to run fast and on the track goals. And it should not become a habit. That habitual or attitudinal habits should not be constrained in our upcoming path. That is the learning. And majors are like, okay, characteristics like for the successful people, like what we had learned, that is for we should be every time we should be having positive state of mind, that should be there. And then our goals should be it should be clear, and how we can achieve short term goals, how weekly goals, how we can achieve, and that is there. And then lastly, how we can motivate ourselves, that self motivation is important, that is there. Great sharing. So I hope everybody, we all are at same page. और एक कमिटमेंट मेरे को करना है, आपको करना है मेरे से, कि नेक्स्ट वीक एक बार मेरे को कॉल करेंगे, चाहे सिर्फ हाय हेलो के लिए कि मेरा ये विक्ट्रीज है. शेयर योर विक्ट्रीज विथ मी ऑन फोन एंड ऑल्सो ऑन दी व्हाट्सएप. कोई आपका विक्ट्री जिसका फोटो ले सकते हैं, शेयर दैट ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, सो दैट वी ऑल आर एनर्जाइज्ड बाय इट. कोई भी आप अपनी विक्ट्रीज प्लीज कीप ऑन शेयरिंग. Okay, now I'll be, so Prakhar, you have joined late, so I'll be sharing the recording with you. Is that okay, Prakhar? Okay, sir. Yeah. So now I'll be sharing the last slide of the day. Yeah, just a minute, I'll just share it. And last slide is very important actually. ये मतलब मैं सभी कुछ को important ही कहता हूँ, लेकिन ये वाकई में सबसे ज़्यादा important है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ. तो हम लोग को क्या इसको पढ़ना है, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप मेरे को, आप प्लीज उसको रिपीट करिएगा, ठीक है? लेट्स, so we say this as a power thought. So if you are not making the progress, please repeat. If you are not making the progress, If you are not progress, you would like to make and are capable of making. you would like to make and are capable of making. It is merely because your goals are not clearly defined. It is merely because merely because your goals are Clearly defined. So very powerful thought, and that's why clarity of goals are very important. So happy weekend and stay energetic, stay positive. Thanks a lot for your patience and for your very good interaction. Thank you. Thank you. Thank you.